हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कंप्लीट इंडियन पॉलिटी से टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर का एक सिस्टमेटिक कोर्स चल रहा है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी की कुछ नए क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हर दिन की तरह वीडियो के एंड में मैं इन क्वेश्चंस में से आप लोगों से सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके सही आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। उम्मीद है ये कोर्स आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आपकी कीमती समय की रिस्पेक्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Number 1. In which articles of the Indian Constitution is the right against exploitation described? Correct answer 23 and 24. Next. Prohibition of human trafficking and forced labor is mentioned in which article? Correct answer Article 23. Next. Employment of children below which age is prohibited in factories or hazardous work? Correct answer 14 years. Next. In which articles is the right to freedom of religion described? Correct answer 25 to 28. Next. In which article is the freedom to manage religious affairs given? Correct answer Article 26. Next. Which article prohibits the collection of taxes for the prohibition of any particular religion? Correct answer Article 27. Next. In which article is religious instruction prohibited in state-funded educational institutions? Correct answer Article 28. Next. In which articles is the culture and educational rights described? Correct answer Article 29 and 30. Next. Which article protects the language, script and culture of minorities? Correct answer Article 29. Next. Which article gives minorities the right to establish and administer educational institutions? Correct answer Article 30. Next. By which Amendment Act was Article 31 repealed? Correct answer 1978 44th Amendment. Next. Which article describes the right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights? Correct answer Article 32. Next. Who described Article 32 as the soul of the Constitution? Correct answer Dr. B.R. Ambedkar. Next. From which country's constitution was the concept of writs borrowed? Correct answer Britain. Next. Under which articles can the Supreme Court and High Court issue writs respectively? Correct answer 32 and 226. Next. What is the literal meaning of habeas corpus? Correct answer to have the body. Next. Which writ is called the bulwark of individual liberty against arbitrary detention? Correct answer habeas corpus. Next. What is the meaning of the writ mandamus? Correct answer we command. Next. Against whom cannot the writ of mandamus be issued? Correct answer President or Governor. Next. What is the literal meaning of prohibition? Correct answer to forbid. Next. What is the meaning of certiorari? Correct answer to be certified. Next. What is the literal meaning of quo warranto? Correct answer by what authority or warrant. Next. Which writ can be filed
in court by any person, not just the aggrieved party? Correct answer, quo warranto. Next, under which article does the freedom of Article 19 get suspended during a national emergency? Correct answer, Article 352. Next, which article defines the state for the purpose of fundamental rights? Correct answer, Article 12. Next, which article declares that any law inconsistent with fundamental rights shall be void? Correct answer, Article 13. Next, which article empowers the state to make special provisions for women and children? Correct answer, Article 15. Next, which article empowers Parliament to restrict fundamental rights of the armed forces? Correct answer, Article 33. Next, restriction on fundamental rights while martial law is in force is mentioned in which article? Correct answer, Article 34. Next, which article empowers Parliament to make laws to give effect to certain specified fundamental rights? करेक्ट आंसर आर्टिकल 35। तो ये था आज का क्लास। तो चलिए अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस? नेक्स्ट, व्हिच रिट इज कॉल्ड द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन? नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिट मैंडामस? तीनों क्वेश्चंस के सही आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। आने वाले दिनों में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।